Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Did I go Haribo 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 Did I go Haribo 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 Jai Gauravanande Tisira Rukmini Dwarkadhish Bhagavan Ki ISKCON Ki Srila Prabhupada Ki Jai Gauravanande. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasachade Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So I'd like to welcome all the devotees to this morning program. And this morning is about the continuation of the building of a vibrant community. वैष्णव समुदाय का विकास उस विषय पर चर्चा करेंगे. ISKCON is also called Krishna consciousness. So consciousness is very dynamic. ISKCON का एक नाम है कृष्ण भावना आंदोलन. भावना अर्थात जो चैतन्य से पूर्ण हो. So it should be vibrant and dynamic. तो यहाँ अत्यंत जीवंत और चैतन्यता से पूर्ण होनी चाहिए. So many people, many other people beside ISKCON devotees, they also have compassion for the general public. ऐसे अन्य कई लोग भी हैं इस हरे कृष्णा आंदोलन को छोड़ के जो जनसाधारण समस्त जीव के प्रति करुणा को प्रदर्शित करते हैं. They also have the pain for the suffering of the people. उनके हृदय में भी अन्य दुख भोग रहे जीवों को देखकर कष्ट होता है. But they don't have the jewel of Krishna consciousness to distribute to the people. परंतु उनके पास वास्तविक जो धन है कृष्ण भावना जो वितरित की जा सकती है ऐसे दुखी जीवों को, वह महत्वपूर्ण धन उनके पास नहीं होता है. They have good intention. They want to help the people. उनका मनोभाव अच्छा हो सकता है, वे सभी को मदद करना चाहते हैं. But they don't have the knowledge. परंतु उनके पास वास्तविक मूल ज्ञान का अभाव होता है. They don't have the books. उनके पास शास्त्र ग्रंथ नहीं होते. But we have the great fortune to have all this information regarding compassion.
लेकिन हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम हमें यह सब कुछ ज्ञान और करुणा सभी कुछ सामूहिक रूप से प्राप्त हुआ है। We have the greatest wealth, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ धन है, but we're not distributing. We are not distributing. हमारे पास सर्वश्रेष्ठ धन है, परंतु दुर्भाग्य है उस धन का पर्याप्त रूप से वितरण नहीं किया जा रहा। Okay, then we need to distribute this jewel. तो इस धन को सही प्रकार से वितरण अति आवश्यक है। Even in material world, the more you distribute, the more you get. भौतिक जगत का भी यह स्वभाव है, जितना अधिक बांटा जाता है उतना अधिक प्राप्त किया जाता है। One who's got wealth but does not distribute, he's called a miser. जिसके पास प्रचुर धन हो परंतु वह अन्यों से बांटता न हो, उसे कृपण कहा जाता है। So it's our responsibility to distribute Krishna consciousness to the people. तो यह हमारा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि इस महत्वपूर्ण धन कृष्ण भावना का वितरण किया जाए। If you distribute millions of rupees, you will also get millions of rupees. यदि आप लाखों रुपए का धन का वितरण करते हैं तो बदले में आपको भी लाखों रुपए का धन प्राप्त होगा। You will get punya. Yes, if you give money, you will get punya. धन का वितरण करने से आपको पुण्य प्राप्त होगा। So similarly, if you distribute Krishna consciousness, you will also get punya. You will get benefits. इसी प्रकार से कृष्ण भावना का वितरण करने से भी आपको सुकृति प्राप्त होगी। And it's very, very mystical, right? It's very mystical. यह बहुत ही चमत्कारिक है। So there was a devotee named Vasudev Datta. श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद में एक भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव दत्त। So Vasudev Datta, seeing the people suffering, he said, "Oh my dear Lord, put all the sufferings of the people on my head. I'm ready to suffer on their behalf." Okay, Vasudev said, "Oh my dear Lord, I'm ready to suffer all the sufferings of the people." वासुदेव ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सभी दुखों को मैं अकेला ही भोगने के लिए तैयार हूँ। You can put all the suffering of the people on my head. संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने जीव हैं, उनके सभी कष्टों का आप कृपया मेरे सिर पर डाल दीजिए। And I'm ready to suffer on their behalf. मैं उन सभी के बदले में उन सभी कष्टों को भोगने के लिए तैयार हूँ। But deliver them. परंतु ब्रह्मांड के समस्त जीवों को उद्धार कीजिए। So this is very, very merciful devotee. तो यह करुणा की जो पराकाष्ठा है वह वासुदेव दत्त में प्रकट होती है। So because the world is in a very, very dangerous situation. क्योंकि वर्तमान में बाह्य जगत अत्यंत भयावह परिस्थिति में है। Prahlad Maharaj also said very beautifully also same thing. प्रहलाद महाराज भी अपनी प्रार्थना में बहुत सुंदर बात कहते हैं। Soche tatha vimukha chetaha indriyartha. He's saying that the people I am very much concerned about those people who are engaged in sun gratification. प्रहलाद महाराज कहते सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थम। हे भगवान, मैं अत्यंत दुखी हूँ, शोक कर रहा हूँ इस संसार में आपसे बहिर्मुख इंद्रिय भोग में लगे हुए जीवों को देखकर। He said, I am not afraid of the danger of this world. मुझे इस संसार का तनिक भी भय नहीं है। Because I'm always 24 hours Krishna conscious. क्योंकि मैं 24 घंटों भगवान श्री कृष्ण की भावना में निमग्न रहता हूँ। But what is my dukkha is seeing the people suffering, the foolish people, they are suffering by enjoying this material world. परंतु मेरे हृदय की वेदना यही है, इस संसार के जीव जो आपको भूलकर इस संसार में भोग कर रहे हैं, उनके कष्टों को देखकर मैं दुखी हूँ। Maya Sukhaya.
Maya Sukhara Bharam Udvahato Vimudha. So my concern is of those foolish people who are making plan for Maya Sukhaya. And then he goes on saying that Munaya Swavimukti Munis, they are just concerned, they are doing tapasya. And they are engaged in mauna vrat, silence. Charanti vijane, they go to the Himalayas, to lonely places. So, na parartha nishta, they are not enlightening others. Because women say they want to be liberated alone, they don't want to deliver the people. So what I want to do, I want to bring those people, my dear Lord, to your lotus feet. So, dear devotees, many of you are born here living here in Amravati. And this is the residence of Rukmini Devi. Rukmini Maya ki, such a great devotee. You must be very, very fortunate to be born here. Prabhupada used to tell the American devotees, once Prabhupada told them, he said, you are American, white body American people. And the whole world is praising America. Then, if you can't do anything, what's the use of you being an American? People glorifying you, white body, American, but if you can't do anything, and then it is useless to be American. Right? So, this is like one devotee was saying in Mauritius also, Prabhupada said, Mauritius may become the first Krishna conscious country in the world. Then he was saying, then what's the use of you being born in Mauritius? You can't do anything. You're not doing anything. And Krishna has placed you there, but you're just useless. So similarly, you being placed here. Haribol, at the feet of Rukmini Maya. Such a great devotee of Krishna, who's asked Krishna to steal me, come and steal me. So this bhakti, this attachment, this prema to Krishna, we need to distribute that to the people. And if we can't do that, then what's the use being born here? Haribol. Rukmini Maya ke. So we should think about it before we end this life. Carry the legacy of Prabhupada to the people. What is life? Life is useless.
if जीवन तो बेकार है we don't preach Krishna consciousness. यदि कृष्ण भावना को वितरण न किया गया तो जीवन बर्बाद है Everything will be finished, everything will be gone. जितना आप कमा रहे सब का सब खत्म हो जाएगा So this is why it's high time for us to do something. अभी बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति है शीघ्र कुछ करने के लिए So that I've said, we as devotees, we have the jewel. जैसे मैं कह रहा था हम जो भक्त है हमारे पास सर्वश्रेष्ठ धन है Coming up, book distribution. We should be distributing books, Prabhupada books. श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों का वितरण करना One devotee was saying, Narottam Das Guru said, when the time will come, when I'm wandering in Brajadham, then my body just collapse and they lift my body. जिस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर कहते शीघ्र ऐसा समय आएगा जब ब्रज भूमि में मैं विचरण करूंगा और अचानक एक दिन मेरा ये शरीर गिर जाएगा Prabhupada said, I also want to leave my body in the battlefield of fishing. श्रील प्रभुपाद कहते थे मैं अपने इस शरीर को गिराना चाहता हूँ युद्ध भूमि पर कृष्ण भावना का प्रचार करते हुए Haribo Prabhupada ki. So then this is the greatness of the make the best use of this body. तो यह सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता है इस मानव जीवन को प्राप्त करने की जो पीछे कुर्सी बैठा आ जा सकते कुर्सी लगी हाँ आइए One time Dadichi Indradev goes to Dadichi and asks Dadichi, Vishnu told me that to ask you for your bones, I need to make a weapon to be able to kill with Trishul. इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु के आदेश से वे दधीचि ऋषि के पास गए उन्होंने दधीचि ऋषि कहा कि हमें भगवान विष्णु ने भेजा है ताकि हम एक विशेष शस्त्र को निर्माण कर सके वृत्रासुर का संहार करने के लिए First Dadichi said, no, can't do that. इंद्र ने उनकी हड्डियां मांगी और दधीचि ऋषि ने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता But then afterward he said, yes, I'll give you. फिर कुछ समय बाद दधीचि ऋषि तैयार हुए और उन्होंने कहा मैं अपने हड्डियों को तुम्हें प्रदान करूंगा If somebody comes to you asking for your bone, are you ready to give? अगर आपके पास कोई आ रहा है आपकी हड्डियां निकाल के दो शरीर से आप देंगे क्या आप मर जाएंगे देगा तो हड्डियां तोड़ के निकाली जाएंगी तो आप मर जाएंगे And Dadichi said, yes, I'll give you. दधीचि ऋषि ने कहा हाँ मैं अपनी हड्डियां दूंगा But he gave a very good point. He made a very good point. बहुत सुंदर एक बात वहां पर कहते हैं He said, this body is वास्तविक देखा जाए यह शरीर हमारे द्वारा भोगा नहीं जा सकता है meant for the benefit of others. वास्तविक यह शरीर केवल अन्यों का कल्याण करने के लिए ही हमें प्रदान किया गया है Very beautiful point. बहुत सुंदर बात शिक्षा It's not meant for me to enjoy. It is meant for the benefit of वास्तविक यह others. शरीर मेरे भोग के लिए नहीं है अन्य जीवों को हित करने के लिए है Tapyante loka tapena prayaso janaha paramaradhanam tadhi purusa shaklatmanaha. This body, a great soul, they accept voluntary suffering for the suffering of others. महान आत्मा जो होती है साधु महात्मा वे स्वेच्छा से इस संसार के ताप का हरण करने के लिए अपने जीवन में ताप को ग्रहण करते हैं Parama aradhanam tadhi, and this is the highest worship. वहां पर शुद्धदेव गोस्वामी कहते यही सर्वश्रेष्ठ आराधना है To accept suffering for the suffering of others. अन्यों के कष्ट को दूर करने के लिए स्वेच्छा से स्वयं कष्ट को स्वीकार करना Prabhupada he accepted 3 heart attack. श्री प्रभुपाद ने
3 हृदय आघात अपने जीवन में स्वीकार किए. Going alone, distribute his own back to Godhead. दिल्ली के कड़ी धूप में अपने स्वयं प्रकाशित भगवत दर्शन पत्रिका का वे रास्ते पर चल चल के वितरण कर रहे थे. Going to the shop, to the bars, to the tea shop alone. अकेले चाय की दुकान, होटल में शराब की दुकान, सभी जगह जाकर वे पत्रिका का वितरण कर रहे थे. One time he fell unconscious also. यहाँ तक कि दिल्ली की भीषण गर्मी में चलते चलते एक बार वे बेहोश चक्कर आके बेहोश होकर गिर गए. He's gone by boat for 1 month. और फिर 1 महीने की भयंकर जहाज से उन्होंने समुद्र में यात्रा की. He's staying in America with the hippies. और फिर अमेरिका में अत्यंत निकृष्ट हिप्पियों के बीच में उन्हें रहना पड़ा. Crazy drugs addicts. पागल विक्षिप्त नशेड़ी भंगेड़ी थे. So he has gone through all this suffering, but for the suffering of others. इन सभी कष्टों को सहज स्वीकार किया केवल इस संसार के लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए. And we are comfortable at home. और हम यहाँ पर फुकट का आराम से खा रहे हैं. We stay at home comfortably. और हम अत्यंत सहजता का आरामदायक जीवन यापन. So our movement ISKCON is a preaching movement. कृष्ण भावनामृत आंदोलन यहाँ प्रचार का आंदोलन है. नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः. Most merciful movement. सबसे महावदान्य आंदोलन है ये. So there is Prabhupada has gone. Yes, Prabhupada has gone through all these troubles to give prema, to give Krishna consciousness to others. श्रील प्रभुपाद ये समस्त भयंकर कष्टों से गुजरे सभी को श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए. What is the greatest fear? They made a survey in the world. What is the greatest fear in the world nowadays? The greatest fear. Huh? Now it is Corona. सबसे भयंकर भय अभी संसार में कौन सा है? They made a survey. They say that उन्होंने अभ्यास किया संपूर्ण जगत का और पता चला है people are suffering from loneliness. सबसे बड़ा भय है आजकल के जमाने में अकेलापन. Why people are suffering from loneliness? अकेलेपन से लोग क्यों? Because there is no genuine relationship. क्योंकि वास्तविक संबंध का अभाव है. Even the relationship of marriage in the West does not sustain. यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन भी अब अधिक दिन के लिए टिकते नहीं है. And friendship doesn't sustain. दोस्ती मित्रता भी अब टिकती नहीं है. Job also doesn't last. नौकरियां भी ज्यादा दिन के लिए टिकती नहीं है. Long ago, people's friendship were very strong. पहले इस समय में लोगों की दोस्ती मित्रता बहुत सुदृढ़ होती थी. Job also, people was working up to retirement. और सेवानिवृत्त होने तक वे एक ही नौकरी में लगे रहते थे. But nowadays there is uncertainty at every step. अभी वर्तमान की जो दोष है कि निरंतर अनिश्चितता बनी रहती है. So relationship after some time become dysfunctional. और जितने भी संबंध हैं कुछ काल के उपरांत वे सभी शुष्क हो जाते हैं. And they also made a survey. The divorce rate has become less. अब वर्तमान में और नया जो अभ्यास किया है. No. The divorce in Europe, the divorce rate has become less. अब तलाक का जो प्रमाण है वो यूरोप में बहुत कम हो गया है. And they were thinking, why? Kali Yuga is becoming less. How is divorce becoming less? जो आश्चर्य हो सकते हैं, अरे कलयुग का जमाना है, इसमें डाइवोर्स कैसे कम हो रहा है? Because they are not getting married. क्योंकि अब कोई शादी नहीं कर रहा है तो फिर तलाक के They are afraid of getting married. अब तो शादी करने से भी लोग डरते हैं. So it's because relationship is not lasting. क्योंकि
कोई भी संबंध दीर्घकाल तक टिक नहीं रहेगा। So there is mostly individualism. और व्यक्तिगतवाद अभी बढ़ रहा है। There is no unity, there is individualism. सभी अलग अलग हो चुके हैं, कोई भी मिलकर सामूहिक रूप से नहीं रह रहा है। Individualism means about me, mine, me and mine. व्यक्तिगतवाद अर्थात अहम 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 अहम, मैं मेरा। So it's becoming also self-centered business. और स्व केंद्रित भावना लोगों की बन चुकी है। So this is what is happening in society nowadays. यह वर्तमान में समाज की स्थिति है। But if we become broad-minded, लेकिन जब हम उदार भावना से युक्त हो जाते हैं, then we associate with devotees. तब हम भक्तों का संग करते हैं। We develop the qualities of tolerance, patience, humility. हम सहनशीलता, धैर्य, विनम्रता, इन सभी गुणों को अर्जित करते हैं। We develop forgiveness. We adjust. We also kind. We become kind. हम अन्य के प्रति दया भाव को वर्धन करते हैं। We learn how to sacrifice oneself for others. और अन्यों के कल्याण के लिए कैसे स्वयं कष्ट स्वीकार करना, यह भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। Of course, we have to have individuality. निश्चित रूप से जीव में व्यक्तिगतवाद सदैव बना रहता है। We have to have freedom. प्रत्येक में एक विशिष्ट स्वतंत्रता है, but should not be too extreme. परंतु उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। So, Prabhupada gave one example. Let's say you go to a lake. जैसे आप एक सरोवर के समीप जाते हैं। Water. जल सरोवर। You take pebbles, stones. पत्थर को लेते हो। You throw one stone in the water. और फिर आप एक पत्थर को उस सरोवर में फेंकते हैं। What do we see? आप क्या देखते हैं? Circle extends. तरंगे बनती हैं, चक्र के समान बिखरने लगती हैं। You throw another pebbles on the same point. और फिर उसी केंद्र पर पुनः दूसरा पत्थर फेंका जाए। The circles will expand up to the shore. और फिर वहाँ जो चक्र, जब दो पत्थर एक ही जगह पर फेंके जाएंगे तो बड़ा चक्र बनेगा जो नदी को सरोवर के किनारे तक जाएगा। The circle, the waves will reinforce the other waves. They become stronger and stronger and stronger. पहले पत्थर के ऊपर ही जब दूसरा पत्थर फेंका जाएगा तो तरंगे और अधिक तेजी से बढ़ेंगी और फैल जाएंगी। So if all our consciousness is centered around one point, Krishna, यदि हम सभी की भावना पूर्णतः से केंद्रित हो एक ही केंद्र बिंदु पर, वह है श्री कृष्ण, then our relationship will reinforce the other relationship of devotees. फिर हमारे संबंध और अधिक प्रगाढ़ और बढ़ने लगेंगे। But if you throw one stone one spot, another stone another spot, you see circles. What happened to the circle? They clash. लेकिन एक पत्थर एक तरफ फेंका जाए, दूसरा पत्थर दूसरी तरफ फेंका जाए तो क्या देखा जाएगा? दो तरंगे निर्माण होंगी और आपस में टकरा जाएंगी। Right? So one center point, there's no clashes. If you put two central, three central point, there will be clashes among the circles. एक केंद्र हो तो उसमें फिर कोई टकराव नहीं होगा, परंतु दो केंद्र, तीन केंद्र, चार केंद्र हुए तो आपस में टकरा कर खत्म हो जाएंगे। So this is called self-interest. When we have self-interest, my own mission, my own business, then we clashes with other devotees. जब स्वार्थ भावना प्रधान हो जाती है, मेरा लाभ, मेरा हित, मेरा कल्याण, मेरा व्यवसाय, तो फिर आपस में मतभेद होते हैं। We need to have the same goal, same opinion together in the society, and then we can conquer the world. और
अगर हम सभी एक मत के एक भाव के हो जाए तो हम संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. So Prabhupada said last time I was saying, Prabhupada mentioned that if there is clashes among devotees, it is the Kali Yuga's influence. श्री प्रभुपाद की हम संदर्भ को चर्चा पिछली बार कर रहे थे कि जब वैष्णव समाज में भक्तों में मतभेद हो तो वास्तविक और कलयुग का प्रभाव होता है. Kali Yuga's business is divide and rules. कलयुग का प्रमुख कार्य है फूट डालो राज करो. One devotee wrote a nice book. It's about nature's IQ. एक भक्त ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, इसका नाम है Nature's IQ. There is very God's arrangement even in the animal's life. और कितने सुंदर व्यवस्था प्राणियों के जीवन में भी भगवान ने की है, वो बताया गया. We can learn so many lessons. और उनके द्वारा बहुत सारी शिक्षाओं को प्राप्त किया जा सकता है. It was explaining that the birds, when they fly, they all fly in a V formation. एक विशिष्ट आकार में V के आकार में वे आकाश में उड़ते हैं. You've seen, no? आपने देखा है कभी V formation, and then they go. वो एक ऐसे विशिष्ट आकार में पद्धति से ही उड़ते हैं. Why V formation? V इस चिन्ह में क्यों उड़ते हैं, कोई जानता है यहाँ पर? So it's explained that when you're flying, there is समझाया गया कि जब वो पक्षी उड़ते हैं they in line up, but in V form, line up and behind the other. तो ऐसे अगर वो ऐसे एक के पीछे एक ऐसे लाइन बनाकर शेप में वो उड़ते हैं. The two in the front, they are leading the group. और दो सबसे सामने जो होते हैं वे संपूर्ण समूह का नेतृत्व कर रहे हैं. And they are also flapping faster. तो सबसे आगे जो रहते हैं वो बहुत तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हैं. So when the first one flap fastest, it's helping the one behind them to also move forward. तो पहला जो नेतृत्व कर रहा है वो बहुत जोर से पंख फड़फड़ाता है, तो यह मदद करता है पिछले वाले को तेजी से आगे बढ़ने के लिए. The second one can flap lesser. पहले वाले की जितनी गति पंख फड़फड़ाने की थी उससे थोड़ी कम गति में पीछे वाला पंख फड़फड़ाता है. Because the first one is flapping stronger. It's helping them. पहलवान है तो वो ज्यादा जोर से करता है, दूसरा वाला उससे थोड़ी कम गति में करता है. And when the first one get tired, another one come and replaced, and he goes to the back. तो इस तरह से बहुत जोर से फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ाते हुए पहला जो नेतृत्व कर रहा है थक जाता है, तुरंत वो पीछे हो जाता है और दूसरे नंबर वाला पहले नंबर पे आ जाता है. And how far do they fly? How far distance do they fly? और कितने अंदर तक ऐसे उड़ पाते हैं? They can fly from Australia up to America. और इस तरीके से जब उड़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एक खंड से वे अमेरिका तक भी पहुंच जाते हैं. Now recently we are proud. They have made flight route for 18-19 hours. The longest route maybe is from Melbourne, Australia to Mexico. They have just started now. Flight. They have started the flight. बहुत लंबी यात्रा वाली फ्लाइट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में वहां से to America. अमेरिका मेक्सिको सबसे. That's about 18-90 hours. 18 to 90 hours. 80 से 90 घंटे की फ्लाइट है. 18 to 19 hours. Yes. How much is that? 80? Okay, no, 18. 18 से 19 घंटे की वो फ्लाइट रहती है. This is recent. It was not there before. Recent. हाल ही में यह फ्लाइट शुरू हुई है. But the birds are flying. परंतु भगवान के प्रकृति में के पक्षी जो है इतनी लंबी यात्रा सदा हमेशा करते हैं. Non-stop. और अखंडित रूप से बिना रुके. But if one bird while flying becomes sick, he will have to come down.
लेकिन अगर अकेला कोई पक्षी और वहां उड़ने लगे, वहां बीमार पड़ गया तो उसे नीचे उतरना पड़ेगा। Then two good bird, good health, they also come down with that one bird to help that bird. From the group. From the group, two other birds will join that one bird who has come down to come and support the bird. उस समूह में यदि एक पक्षी बीमार हो गया तो उसे नीचे उतरना पड़ता है, तब अन्य और दो पक्षी रहते हैं जो उसके साथ में नीचे उतर जाते हैं। Will support that bird उस पक्षी until it gets better. जब तक वो पक्षी स्वस्थ नहीं हो जाता। And then they will fly again and join that V formation. और फिर तीनों उड़ेंगे और फिर उस वी समूह को जुड़ जाते हैं। Or they might join another groups also. तो पीछे से दूसरा अगर वी वाला ग्रुप आ रहा है तो दूसरे बैच में चले जाते हैं। So this is a cooperations of ये हम प्रकृति के द्वारा सिखाया जाता है आपसी सहकार्य भावना को देखते हैं। is even seen in birds. जो पक्षियों में देखी जाती है। What about us? हमारे बारे में क्या कहा जाए? So we should be having that kind of softened heart हमारे पास ऐसा कोमल हृदय होना चाहिए सहकार्य भावना to accommodate devotees. ताकि सभी सम्मिलित हो सके। And human has got this greatest wealth where it can accommodate all this. और मनुष्य के स्वभाव में यह गुण निहित है कि वह अन्यों के साथ सम्मिलित होकर कार्य कर सकता है। This happened in Lahore. Lahore, there was one man, he was a poor man, I've said this story many times. He went to city to get it. He didn't have money, no food, and no job. So he went to town to get money, to get a job. Lahore, yeah. उसके पास भोजन नहीं था, पैसा नहीं था, तो वह दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने गया। So I wanted to say, when we have common purpose, when we all have common purpose, our goal is one, then success is achieved. जब सभी का एक लक्ष्य हो जाता है, तो सफलता सहजता से प्राप्त होती है। So what happened is, this man, he went to town, he could not get a job, no money, no food. लाहौर का ये व्यक्ति था, वो दूसरे शहर में गया, नौकरी के लिए नौकरी नहीं मिली, भोजन नहीं मिला। So what happened? He was coming back. तो वहाँ अपने गाँव वापस आ रहा था। And there was a jamindar, jamindar, rich person or king. बहुत ही धनी जमींदार वहाँ पर था। He's got his big garden, जिसका बड़ा बगीचा था, many trees, जिसमें कई वृक्ष थे। but one big tree containing mangoes, that branches was coming outside on the street. तो एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष था जिसमें बहुत सारे लदे हुए आम के फल थे और उसकी शाखाएं बहुत बड़ी हुई थी जो मार्ग में रास्ते तक झुक रही थी। So the man was thinking, let me pick some mangoes for my family, can at least get some food. तो वह जो शाखा है रास्ते पर झुकी हुई थी, उसके आम को देखकर उस व्यक्ति ने विचार किया, मैं कुछ आम तोड़ लेता हूँ, कम से कम आम तो मैं अपने परिवार को दे पाऊंगा। So he picked some stone and just throw the stone to pick the mango. तो उसने पत्थर उठाया और उस वृक्ष की ओर फेंका आम प्राप्त करने के लिए। But the Malik, the Damindari, was sitting inside. परंतु कंपाउंड वॉल के दूसरी तरफ जमींदार बैठा हुआ था कुर्सी लगा के। So that stone unfortunately missed the tree and hit the king. वो उसका निशाना सही लगा नहीं और पत्थर जाके सीधा उस मालिक जमींदार के सिर पर पड़ा। It was kind of a kingly person, right? King, I can say king. वो राजा था वहाँ का। So then Raja became, and the Sainik came, and what happened? What happened? Somebody's hit me. And they went out, they saw the man is picking another stone. And he's throwing. And the king the Sainik started beating him. And then they took him to the king. King said, put him in jail.
तुरंत उसको जेल में डाल दो। So poor man, no food, no job, no money, end up in गरीब jail. आदमी, पैसा नहीं था, भोजन नहीं था, नौकरी नहीं थी, right? And then he was in jail. और अब पूरी और फिर अगले दिन राजा जेल में जाकर उस आदमी से पूछता है, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? And the man said, "My dear king, sorry, I'm very, very sorry. I did not do this purposely. My family, we are poor, no money, no food, job. I thought I could get some food." क्षमा चाहता हूँ राजा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी नौकरी नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं, भोजन नहीं है, और मेरा परिवार बहुत भूखा है, तो उनके लिए मैं कुछ लेके जाना चाहता हूँ। So I picked a stone to get some mango. मैंने पत्थर उठाया था आम प्राप्त करने के लिए। But unfortunately, you were hit. परंतु आम नहीं मिला, आपका सर फूट गया। Sorry. क्षमा चाहता हूँ। And the king's heart melted. ये बात सुनकर राजा का दिल पिघल गया। And told his ministers, please give him bags of rice, food. इस व्यक्ति को गेहूं, दाल, चावल के बोरे दिए जाए। And the minister said, "Why, dear king? He hit you. Can't you see? You got hurt." तुरंत मंत्री ने कहा, महाराज जी, इसे फायदे क्यों दे रहे हो? इसने तो पत्थर पे क्या आपको मारा है, आपको कष्ट दिया है। King said, "See, if stone would be helping him to get food. Stone is hard, but that stone, my heart is harder than that stone." तुरंत राजा ने कहा, देखो, वो आम प्राप्त करना चाहता था, वो पत्थर इतना कठोर है, वो पत्थर भी इस व्यक्ति की मदद कर रहा था, और मैं मदद न करूं तो मैं तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर होगा फिर। Got it? I bow. समझ में आ गया? The tree, the pattar is a dead matter, and the tree is a non-moving entity. Non-living entity, and that stone would be helping him. Me, I'm the king. What I did, I put him in jail. ये दोनों मिलके ऐसे दुखी व्यक्ति को मदद कर रहे हैं, और मैंने क्या किया? मैंने दुखी व्यक्ति को जेल में डाल दिया। So I am hard-hearted. वास्तविक मैं पत्थर दिल हूँ। So please give him rice. कृपया इसे दाल चावल गेहूं दो। So the point is, our heart should not be also like stone. तो महत्वपूर्ण बात ये है, हमारा जो हृदय है वह भी पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए। Should be like makhan. हमारा हृदय मक्खन के समान कोमल होना चाहिए। Why Krishna was stealing makhan from the gopis? श्री कृष्ण गोपियों से मक्खन क्यों चुराते हैं? Because the heart was like makhan. क्योंकि गोपियों का हृदय भी मक्खन के समान कोमल है। So Rukmini Mata, she is the most merciful. रुक्मिणी माता सबसे अधिक दयालु है। The greatest devotee. सबसे महान भक्त है। The most humble devotee. और सबसे सरल स्वभाव वाली है। Not Satyabhama. सत्यभामा उतनी सीधी नहीं है। रुक्मिणी महारानी एकदम सीधी है। Satyabhama was like very kathor. सत्यभामा थोड़ी कठोर है। But Rukmini extremely humble. रुक्मिणी महारानी बहुत नम्र भी है। So humble, Krishna has never seen her becoming angry. यहाँ तक बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी रुक्मिणी माता को क्रोधित हुए कभी देखा नहीं। Not even talking very loudly. कभी ऊंची आवाज में रुक्मिणी महारानी ने कोई शब्द नहीं निकला। In his frowning of her eyes. कभी उनकी आंखें क्रोध से लाल लाल होते दिखी नहीं। Not at all, never. कभी नहीं हुआ। Because she was such a great devotee and humble. She was a great devotee and humble. क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण की महान भक्त थी और अत्यंत नम्र थी। So much so that Krishna wanted to see her anger. और इतना अधिक वहाँ नम्र थी, श्री कृष्ण लालायित थे, हम सब एक बार तो भी रुक्मिणी महारानी के मुख पर मैं क्रोध को देखूं। And then Krishna tested her. तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी मैया
की परीक्षा ली, still she did not become angry. Still she did not become और angry. जब श्री कृष्ण ने परीक्षा ली तब भी रुक्मिणी महारानी क्रोधित नहीं हुई। Instead, she fell down. God, और उसके वजह क्या हुआ? रुक्मिणी महारानी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। and Rukmini felt, Krishna said, "Hey Rukmini, you got so much opportunity to get married with very rich king, very powerful king. Why did you choose me?" वहां पर श्री कृष्ण परिहास करते हुए रुक्मिणी माता से कहते हैं, तुम्हारे पास कितना अवसर, अच्छा अवसर था, कितने धनी, कितने शक्तिशाली महान राजा के साथ तुम विवाह कर सकती थी, तुमने मुझे क्यों चुना? Rukmini Devi said, he said, "My dear Lord, this king, the body is made of blood, pus, hair, bones, marrow, and all horrible, horrible things. तब उन्होंने रुक्मिणी महारानी ने कहा, ये जितने भी राजा थे, इन सभी का शरीर हड्डी, मांस, रक्त, पस आदि से बना हुआ है, Stools. और मल मूत्र से भरा हुआ थैला है। And when the body will fall down, they will जब be एक दिन का शरीर गिर जाएगा, eaten by dogs and jackals and vultures. शियार, कौवे ये सब उनके शरीर को नोच-नोच के खा जाएंगे। And these king, they have to get married with women who have your glories. और यह राजा केवल ऐसी स्त्रियों के द्वारा ही विवाहित होंगे जो स्त्रियों ने कभी आपकी महिमा का श्रवण नहीं किया है। Rukmini Maya came, but Rukmini had heard about Krishna's glories. परंतु रुक्मिणी महारानी ने श्री कृष्ण की महिमा का पर्याप्त श्रवण किया था। So the point I want to make that we devotees who are born around here, who are living here around at the feet of Rukmini Devi, तो महत्वपूर्ण बात यह मैं कहना चाहता हूँ, हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली भक्त हैं जो ऐसी श्रीमती रुक्मिणी महारानी के चरणों में वास कर रहे हैं। and with that Rukmini Vedic, yes, Rukmini Vedic cultural Santa Haribol. So that is coming up. We should come together for the glorification of Rukmini Maya. ऐसे श्रीमती रुक्मिणी महारानी की महिमा को अधिक प्रसारित करने के लिए हम सभी को एकत्रित आना चाहिए। So if we want to have a vibrant community, three things are required. तो ऐसे सुदृढ़ वैष्णव समुदाय के लिए तीन महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। नाम रुचि, Jivedaya, Vaishnava Seminar. These three things is required if we want to have a very, very vibrant community. ऐसे वैष्णव समाज अत्यंत सुदृढ़ मजबूत हो सकता है जब ये तीन खंभे उसके रहते हैं, नाम रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। These three things combined together will make temple vibrant. ये तीन जब एक साथ हो जाए तो वैष्णव समाज सबसे मजबूत हो जाता है। Otherwise, the temple will become slack, temple will be not vibrant, and then they will be full of prajalpa and no preaching activities. यह तीन कार्य न हो तो फिर वह समाज अत्यंत कमजोर हो जाता है और वहाँ चर्चा प्रजल्प आदि होने लगता है। So, and that is the desire of Gurudev and Prabhupada. यही वास्तविक हमारे आचार्य गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। Last time I was saying one more point. I would also like to have your the Guruji, father. I would say, okay, father was thinking. The father was about to die. एक समय एक पिताजी की मृत्यु होने वाली थी। It was still okay, but not really going to die. But it was old, like. तो एकदम मरने नहीं वाले थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। It was an anxiety. और बहुत बीमार थे और चिंतित थे। His 4 children, what are going to happen if I die?
और फिर उनके मन में यही चिंता रहती थी, मेरे 4 पुत्र हैं, इन 4 बेटों का क्या होगा जब मैं मर And the children, they were not together. They were just all और जब मैं मर जाऊंगा तो सब एक साथ नहीं रह पाएंगे. So then he gave them each one stick. तो उसने क्या किया, चारों को एक-एक लकड़ी दी. And he told them, you break it. और फिर चारों को कहा कि इस लकड़ी को तोड़ दो. And they all break it easily. सभी ने सरलता से लकड़ी तोड़ दी. It's easy. One stick is easy to break. एक लकड़ी अत्यंत सहजता से तोड़ी जा सकती है. And then he told them, he gave them stick, a bunch of stick together. और फिर एक पूरा बंडल दिया उन्होंने लकड़ियों का. And he told them to break. और बंडल जो बंधा हुआ था, They could, चारों भाइयों के हाथ में दे रखा कि अब इसे तोड़ो. they could not break. लेकिन वो तोड़ नहीं पाए. Why? क्यों? Because the stick are together. So क्योंकि वह लकड़ियां सभी बंधी हुई थी आपस में. united we stand, divided we fall. जब एकत्रित रहते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, और जब विभाजित हो जाते तो हम गिर जाते हैं. There will be in the temple, I know also, there's no temple in the world which is perfect. There is also difficulties and problems are there. इस भौतिक जगत में ऐसा पूर्ण है, सभी में कुछ न कुछ कमी और अभाव दोष है. But our aim should be, we want to succeed, we want to push forward for Srila Prabhupada's pleasure. हम सभी का एक में प्रयोजन है, हम सभी श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहते हैं. By sitting down and backbiting, we will not move forward. केवल बैठकर पीठ पीछे एक दूसरे की चुगलियां करने से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा. We should, योगदान करना है, and also collectively. सामूहिक रूप से भी योगदान करना है. Rukmini Cultural Center can become the most vibrant temple. तब यह रुक्मिणी वैदिक संस्कार केंद्र संपूर्ण विश्व में सबसे सुदृढ़ मंदिर हो जाएगा. We have the best philosophy. हमारे पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है. Other people, they also compassionate, don't know what to do. अन्यों के पास भी शायद दया भाव होगा, लेकिन उनके पास सही ज्ञान नहीं है कैसे दया कर सकते हैं. And people, they are thinking Manav Seva. That's what they say. Manav Seva, Madhav Seva. और दुर्भाग्यवश ऐसे अज्ञानी लोग मानव की जो दैहिक सेवा है उसी को ही माधव सेवा मान लेते हैं. But that will never help. परंतु यह वास्तविक संसार का कल्याण नहीं कर सकता. We need coronavirus. हमको जो है कोरोना नहीं, करुणा वायरस की जरूरत है. We need coronavirus. Then this corona will disappear. तो फिर जब करुणा आ जाएगी तो कोरोना फिर गायब हो जाएगा. So we have, Prabhupada did not build hospital or school. Prabhupada built temple. श्रील प्रभुपाद ने स्कूल अस्पताल नहीं, श्रील प्रभुपाद ने मंदिर का निर्माण किया. Because temple means Jivedaya. Temple means वास्तविक जीवों पर दया इस मंदिर के द्वारा हो सकती है. Jivedaya. So make the best use of this lifetime. तो सभी से यही निवेदन है कि अपने इस मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ उपयोग करें. And come together सभी एक साथ मिलकर and very strong sadhana. सभी मिलकर बहुत अच्छी तरह से दृढ़तापूर्वक साधना करें. No, sometimes we say, no, I am not the temple president, I am not the leader, I'm not doing it. So I'm okay, I'm just free. No. कोई विचार कर सकता है मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं, मैं कोई मंदिर का नेता नहीं हूँ, मैं कोई. Each of us, we have a responsibility. यहाँ पर प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से हर एक की उत्तरदायित्व है. A disciple is meant to help the spiritual master in his mission. वास्तविक शिष्य वही है जो गुरु के कार्य में उसे सहकार्य करता है. When Prabhupada went to America, so many youngsters joined him. श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य जगत में गए, कई युवा लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी को सहकार्य किया. Prabhupada said, these youngsters, you have been sent by my guru. और उस समय श्रील प्रभुपाद ने नम्रता पूर्वक कहा कि जितने भी युवा जन थे, कि तुम्हें सभी को मेरे गुरु महाराज ने भेजा है.
to help me in his mission. उनके कार्य में मुझे मदद करने के लिए। So especially initiated devotees, others also, but especially initiated devotees, we have a responsibility. अन्य की भी है ही, लेकिन विशेष रूप से जो इस संप्रदाय परंपरा में भिक्षा आदि ग्रहण किए, उनका अत्यंत गंभीर उत्तरदायित्व है इस आंदोलन के प्रति। So we do something, some preaching program, some activities, some seva, anything we should do. निश्चित रूप से हमने कुछ विशिष्ट योगदान करना चाहिए, उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिए प्रचार में, विभिन्न प्रकार की सेवाओं में, and carry this legacy of Prabhupada. और फिर श्रील प्रभुपाद के इस धरोहर को आगे तक पहुंचाना है। One last point I want to make. One time I was in UK. मैं अंतिम बात जो कहना चाहता था, एक समय मैं यूके में था। Lokanath Maharaj was there. प्रभु जी लोकनाथ महाराज के साथ में था। So he had been also helped me with my traveling with him to UK, Europe. महाराज जी मुझे यूके और यूरोप में यात्रा के लिए मदद भी कर रहे थे उनके साथ में। And then last day Maharaj was leaving. अंतिम दिन में भी महाराज जी वहाँ से जब प्रस्थान कर रहे थे, he was coming back to India and I was going back to Holland. तो महाराज जी भारत वापस लौट कर आने वाले थे और मैं हॉलैंड जाने वाला था। And I told Maharaj ji, I thank you very much for making all my traveling. तो मैंने निकलते समय अंततः महाराज जी को कहा कि महाराज धन्यवाद, आपने मेरी यात्रा की व्यवस्था करवाई इसके लिए। And I told him I have learned so much by traveling with you. तब मैंने कहा महाराज जी मैंने आपके साथ यात्रा करके बहुत कुछ बातें सीखी। And Maharaj said, so what did you learn? फिर महाराज ने पूछा। I said, Guru Maharaj, I have observed this time I was with you. You spend your time without wasting a single moment. And sincerely, from the core of your heart, you are giving to the people what you have received from your Guru. That gift, you want to give it, and you're also very convinced about it. Okay. I saw that you're carrying the legacy of your Guru. मैंने यह देखा कि आप वास्तविक अपने गुरु के मनोभाव को आगे बढ़ा रहे हैं। And sincerely, without wasting a single moment. अपना एक भी क्षण आप व्यर्थ नहीं गवा रहे हैं। And you're giving to the people what you have received from your Guru. आपने अपने आध्यात्मिक गुरु से जो स्वीकार किया है, उसी को आप अन्य जीवों तक अपने हृदय से वितरित कर रहे हैं। And you're giving it with conviction. और पूर्ण होके दृढ़ विश्वास के साथ आप उसको अन्य को दे रहे हैं। With sincerity, you're giving to the people. और इतने प्रामाणिकता से आप उसे अन्य तक पहुंचा रहे हैं। Why? Because Maharaj, he's convinced that this world is fake. This world is temporary. He's convinced his only solution is the mercy of Guru. क्योंकि महाराज पूर्णतः से विश्वास हो चुके हैं कि यह संसार नाशवान है, मिथ्या है और वास्तविक गुरु की कृपा ही एकमेव उपाय है। And devotees of such caliber, they don't waste their time. ऐसे जो भक्त होते हैं, वो अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते हैं। When Guru Maharaj came to Jhansi, एक समय महाराज जी जब झांसी में आए थे, so Jhansi devotees came to welcome him at the station. सभी झांसी के भक्त रेलवे स्टेशन पे महाराज जी का स्वागत करने आए। And Maharaj, on that day, he received 50 garlands. और उस दिन फिर इतना भव्य स्वागत हुआ, महाराज जी के गले में लगभग 50 मालाएं पहनाई गई। Hari Bol. How many? 50. And then he made a comment. और उस समय फिर महाराज जी ने अपनी टिप्पणी दी। When Maharaj come to Mauritius, in fact, at the airport, 200 devotees come. महाराज जब मॉरिशस में हमारे देश में आते, कम से कम 200 भक्त वहाँ पर एयरपोर्ट पर महाराज जी का स्वागत किया जाता है। And we also have you saw, and we also last time he came, we had a red carpet.
और इस बार तो एयरपोर्ट पर जब महाराज जी आए थे, पूरे एयरपोर्ट पे हमने रेड कारपेट बिछा दिया था। नहीं वो And everyone was with banners, with a placard, not Mahamantra, because he has made, it's called Disciple Mitra Sangh, different areas. Mara disciple, they meet every month, groups. So they all have come with a banner. सब अपने अपने टोली का नाम, जैसे वहाँ पर अलग छोटे समूह में सत्संग बनाए गए हैं, मित्र संघ में कहते हैं, तो वो सब अपने अपना नाम लेकर वहाँ पे समूह में खड़े थे। Many banners. और कई ऐसे फिर बैनर थे वहाँ पर। And Mara was so happy about it. और जब महाराज ने इनसे वक्त लेकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। So and even in the airport, huge kirtan. Normally it's not allowed, but we do. बाकी किसी को अनुमति नहीं मिलती, लेकिन हरे कृष्ण वालों को वहाँ पे धमाधम जोरदार कीर्तन करने की अनुमति मिलती है। So when he was in Jhansi, झांसी में जब महाराज थे, महाराज के स्वागत के बाद, and he got 50 garland. 50 मालाएं पहनाई। And Maharaj said, "This garland are not for me. These are Prabhupada's. This garland belongs to Prabhupada." और तब महाराज जी ने जैसी मालाएं सब स्वीकार की, तो महाराज जी ने कहा कि ये सब मालाएं मेरे लिए नहीं है, ये सभी मालाओं के मूल हकदार हैं श्रील प्रभुपाद। Because of Prabhupada, I am receiving so many garlands. केवल श्रील प्रभुपाद के कारण ही मुझे इतनी सारी मालाएं मिल रही है। So this garland does not belong to me; it belongs to Prabhupada. मालाएं मेरी नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद की है। You see, that's what the devotees, acharya, they always think like that. When they get something, they offer it to their guru. तो यह वास्तविक भक्त का मन, सही भक्त का मन, जो कुछ अपने जीवन में प्राप्त करता है वह गुरु को चरण में अर्पित कर देता है। It goes to parampara, up to Krishna. और इस प्रकार से परंपरा के द्वारा वह श्री कृष्ण तक पहुंच जाते हैं। Maharaj did not say, "Oh yes, I got so many garlands." ऐसा नहीं कि वो महाराज के फूल के गोलगप्पा बन गए थे कि मुझे इतनी सारी मालाएं मिली। Because when Prabhupada came to Jhansi for the first time, Prabhupada did not receive a single garland. प्रभुपाद उस समय महाराज जी स्मरण कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद जब झांसी में आए, प्रभुपाद के स्वागत में कोई नहीं था, प्रभुपाद को एक भी माला नहीं मिली थी। Right? That's the first place where he started the Liga. झांसी में प्रथम स्थान है जहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने प्रचार को प्रारंभ किया था। So he did not receive one single garland. और उन्हें एक भी माला उस समय नहीं मिली। Now Prabhupada is receiving, Guru Maharaj is getting 50 garlands. और महाराज जी को एक साथ 50 मालाएं मिल रही थी। It's all because of the mercy of Srila Prabhupada. केवल श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण। Now it's not difficult for us to build Rukmini cultural temple because Prabhupada already set up everything. अब हमारे लिए बहुत बड़ा कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण संसार में कृष्णवाद आंदोलन का प्रभाव फैला दिया है। So this is how we should. ISKCON is a very special, great society. ISKCON बहुत ही विशेष महान आंदोलन है। Very vibrant, बहुत ही जीवंत, dynamic and powerful movement चैतन्यपूर्ण और शक्तिशाली आंदोलन है in the whole world. संपूर्ण विश्व में। So if we come together, do something, यदि हम सभी मिलकर एक साथ आते हैं और विशेष कुछ कार्य करते हैं, maintain our good sadhana, बहुत अच्छी तरह से अपनी साधना करते हैं, and then preach to others, और अन्यों को भी कृष्ण भावना का प्रचार करते so life will become very blissful. हैं, तो वास्तविक जीवन जो है आनंद से पूर्ण हो जाएगा। Hare Krishna, Srila Prabhupada ki, Rukmini Vedic Cultural Center ki, Nitai Gaur Bhivanande. Thank you very much for your attention. Maybe I'd like to have some questions. किसी को प्रश्न जिज्ञासा, प्रभु जी प्रश्न जिज्ञासा के अवसर से दे रहे हैं। बताइए कोई प्रश्न से पूछा सकता है। Any question? Mataएं? It's already 9:30. So, stop. ऐसे वरिष्ठ वक्ता है, किसी को प्रश्न निश्चित अवसर गवाने चाहिए, तो पूछना चाहते हैं कि पूछ सकते हो।
Mhm. All right. Okay, so stop. Thank you so much. You have something to say? शिवा सवाल पूछेंगे तो बहुत तो बोलेंगे there's still half an hour for prasad. Yeah, prasad is the cooking prasadam. Not half an hour, maybe 20 minutes more. Yeah. Hmm? All right. If we don't have any question, then yes, Advaita, Charya. जितने भी मतलब गुरु आचार्य हुए तो सभी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहे और मतलब हमेशा उनकी जो योगदान है या जो उन्होंने भक्ति प्रदान किए जो ज्ञान प्रदान किए तो सभी गुरु आचार्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें गुरु ने कुछ दिया है या प्रभुपाद ने कुछ दिया है या हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इस सही मनोवृत्ति को भाव को किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं? जैसे एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद आई डोंट फील टू ऑफर आपको मैं ऐसा नहीं लगता है कि मुझे आपको दंडवत करना चाहिए। तो हमें भी नहीं लगता है कि गुरु ने हमें हमारे लिए कुछ किए हैं या हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसको You want to repeat that? बोला ओके सब लोग प्रभु जी का प्रश्न है कि जितने प्रामाणिक भक्त जितने आचार्य सभी के जीवन में विशेष गुण देखा गया कि उन्होंने सदैव अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है पूर्ववर्ती आचार्य गुरु के प्रति और अपने जीवन में निश्चित रूप से गुरु के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया सेवा अर्पित की है। परंतु कभी कभी भक्तों में यह दोष देखा जाए कि उनमें यह कृतज्ञता का अभाव देखा जाता है। उन्हें यह नहीं लगता कि श्रील प्रभुपाद गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है और वह फिर कुछ करने में उत्साह नहीं दिखाते हैं। Long ago, the disciple, they were living with the Gurukul, and Guru was very close to them. Was taking care. On in a preaching society, the same thing now has been transformed. वर्तमान में जो कृष्ण आंदोलन आधुनिक जगत में है यह थोड़ा परिवर्तित रूप से है। And it is said that according to rules, a brahmachari should only eat when a guru gave permission. तो वैसे वैदिक नियम अनुसार ब्रह्मचारी भिक्षा अर्जित करके गुरु को अर्पित करता है वह भोजन तभी कर सकता है जब गुरु उसे अनुमति दे। And if guru forgets, then he will and अनुमति देना भूल गया he will have ब्रह्मचारी को उपवास करना चाहिए। Yes. Now my question: मेरा प्रश्न है, are you is Gurudev giving you permission to eat every day? मेरा प्रश्न है अद्वैत गुरु से, क्या आपके गुरु महाराज आपको अनुमति देते हैं क्या प्रसाद लेने के लिए? What does that mean? उसका मूल भाव क्या है? It means Gurudev, even for grihasthas also. Prabhupada said, before eating, grihasthas, Matajis, Prabhuji has to go on the street. Call, anyone is hungry, please come and take food. और उसी प्रकार से गृहस्थों के लिए एक वैदिक नियम बतलाया गया है कि जब भोजन बना ले तो पति पत्नी दोनों रास्ते पे जाकर जोर से चिल्लाना चाहिए, कोई भूखा है क्या? Anybody doing that? तो ऐसे कौन से गृहस्थ यहाँ पर हाथ ऊपर करो जो अनुरोध करते होंगे? Prabhupada said, this is regarding brahmachari. Gurudev has already set up the timing.
परंतु गुरु जो है एक व्यवस्था, एक प्रणाली प्रदान करते हैं, एक विशिष्ट आशय, Gurudev. तो एक समय भी निर्धारित किया जाता है और स्थानिक अधिकारी भी प्रतिनिधित्व करते हैं. So, Gurudev is not a question of physical. गुरुदेव केवल शारीरिक रूप से ही सदैव साथ में रहते हैं. There is Vani and Vapu. वपु के साथ साथ Not only physical Vapu, but most important is Vani. वपु जितना आवश्यक है उससे अधिक आवश्यक है वाणी. We should also have Vapu, but most important is Vani. वपु जितना आवश्यक है उससे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण वाणी है. One time Prabhupada was coming to Mayapur. एक समय श्रील प्रभुपाद जी मायापुर आ रहे थे. From Calcutta, he was going to Mayapur. कलकत्ता से श्रील प्रभुपाद वाहन से फिर मायापुर के मंदिर में जा रहे थे. And Mayapur, you have ISKCON temple right there. मायापुर में इस्कॉन का भी जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जा रहे थे. But before reaching Mayapur, you have to cross Bhaktisiddhanta Maharaj, his samadhi and ashram. तो भक्तिदास सरस्वती का महाराज जी का जो मठ है, उनकी समाधि स्थान है, वहाँ से गुजरना पड़ता है जब आप इस्कॉन ले जाते हैं मायापुर. But when Prabhupada was going to Mayapur, he did not stop at the samadhi of Bhaktisiddhanta. तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन के मंदिर जा रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी बीच में भक्तिदास समाधि पर रुके नहीं और आगे चलती गई उनकी गाड़ी. But some Gaudiya devotees, they were criticizing Prabhupada. और फिर कुछ गौड़िया मठ के जो भक्त थे वे श्रील प्रभुपाद जी की निंदा करने लगे. Oh, he's a disciple of Bhaktisiddhanta, but he did not come to pay obeisances. He just... ये देखो भक्तिदास सरस्वती का शिष्य है, लेकिन भक्तिदास सरस्वती महाराज को प्रणाम करने के लिए नीचे उतरा तक नहीं. And they told Prabhupada about the disciples. ये समाचार फिर शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद को जाकर बताया कि श्रील प्रभुपाद आपके बारे में ऐसी चर्चा चल रही है. And Prabhupada responded. तब श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया. Prabhupada said, I was never detached from my spiritual master. श्रील प्रभुपाद ने कहा मेरे जीवन में कभी ऐसा क्षण नहीं आया कि मैं अपने गुरु से अलग था. मेरे गुरु महाराज सदैव मेरे साथ थे. I'm always with my spiritual master. मैं हमेशा हमेशा अपने गुरु महाराज के साथ हूँ. There was no moment that I was away from my spiritual master. एक क्षण भी ऐसा नहीं था जब मैं अपने गुरु महाराज से विलग हुआ होगा. What does that mean? तो इसका अर्थ क्या हुआ? This is not necessarily physical. यह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं आवश्यक है. Yes, following instruction of your spiritual master. क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज के निर्देश को अपने हृदय में धारण कर लिया था. Every day you paying obeisances to your spiritual master. प्रतिदिन आप जब प्रणाम करते हैं तो गुरु को प्रणाम किया जाता है. When you come to the temple, you're paying obeisances. When you come here, you're paying obeisances to your spiritual master. When you come to Krishna, you're always paying obeisances to your spiritual master. जो भी कार्य करते हैं, मंदिर प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, सभी और गुरु का स्मरण किया जाता है. So the Vani is most important. वाणी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण है. So make this relationship of the spiritual master, instruction of spiritual master, make it your life and soul. तो गुरु के निर्देश को अपने जीवन का प्राणाधार बनाना अति आवश्यक है. This relationship is not material. This relationship is not material. केवल यह जो गुरु और शिष्य का संबंध है यह भौतिक नहीं है. It's life after life. It's eternal. और यह जो शाश्वत नित्य संबंध है जो सदा के लिए बना रहता है. It is not just a relationship like wife and husband. जैसे इस संसार के नश्वर संबंध पति होते हैं वैसे संबंध नहीं है ये. Guru Mukha Padmavakya Chitete Koriraikya. The words of the spiritual master make it. So, of course, some devotees, they may be thinking we don't feel having relationship with our spiritual master, but relationship is there.
through service. कोई शिष्य अज्ञानतावश यह विचार करता हो कि मेरा गुरु से संबंध नहीं है, परंतु वो संबंध तो रहता ही है। It's there through service. और सेवा के द्वारा वह संबंध और सुदृढ़ होता है। Either you big devotee, small devotee, medium devotee, चाहे कोई मोटा भक्त हो, बड़ा भक्त हो, छोटा भक्त हो, मध्यम भक्त हो, maha small devotee, very small devotee, और एकदम अति छोटा भक्त भी क्यों ना हो। but your relationship. Who was when they were crossing Lanka? It was Kurel was coming and he was putting sand. तो राम सेतु के समय में देखा गया कि लंका को जाते समय एक छोटी सी गिलहरी थी जो अपने शरीर को बालू लगाकर राम सेतु में सहायता। Ram said, "Get out! What are you doing?" हनुमान जी ने कहा कि निकल जाओ इधर से। And Ram said, "No, he is doing according to his capacity." और तब भगवान रामचंद्र ने कहा अपनी क्षमता के अनुसार वह सबसे श्रेष्ठ सेवा कर। You are big, you can do bigger. तुम्हारा शरीर बड़ा है, तुम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हो। So each and every one's service is noticed by God. प्रत्येक जीव जो सेवा करता है, श्री कृष्ण उस सेवा को ध्यान रखते हैं। And Gurudev relationship is also very there. It's intact. उसी प्रकार से गुरु के साथ संबंध दिव्य धरातल पर होता है। I believe that's satisfying to you what I have said. प्रश्न उत्तर मिला क्या? Or maybe other questions? पूछ लो। Yeah? तो जो कृतज्ञता का जो भाव है कैसे है? वो कैसे विकसित कर सकते हैं? How to mood of gratitude. हाँ, तो गुरु की जो हमारे जीवन में जो Yeah, Guru. Whatever we have is due to Guru. How we can understand it? That's what I'm saying. Instruction Guru has given, just engage, thinking that this is my love for Krishna. What we have received now in Bhakti. Yeah. This is only because of him. Yeah. Realize that. That's what I'm saying. We have to understand this in the association of devotees, that this is Guru Mukha Padmavake, whatever the word he has given, that should become your life and soul. You know, that's it. So Prabhupada took the words of his Guru, he went to America. His Guru was not there. It's just instructions of his Guru. So, and he expanded that instruction of his Guru. And that is his bhav. See, just see, a small instruction. You, young guy, young man, preach Krishna consciousness in English language. Only instruction he gave. छोटा सा प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि जब भक्तों के संग में हम रहते हैं और गुरु के निर्देश को जितना अधिक आत्मसात करते हैं उतना अधिक भाव का विकसित करते हैं। And he became श्रील प्रभुपाद को केवल छोटे सा निर्देश मिला था, कितनी छोटी सी बात थी, अंग्रेजी भाषा में कृष्ण महानाम प्रचार। a small instruction expanded ecstasy all over the world. और वह एक छोटा सा एक शब्द था गुरु का जिसको उन्होंने आत्मसात किया, जिसने आज संपूर्ण विश्व में कृष्ण महानाम प्रचार। He made the whole world dance. वे थे जिन्होंने संपूर्ण दुनिया को नचा दिया। Right? Hari Bol, Sri Prabhupada ki. Mataji? Yeah. While doing other services, the enthusiasm is there, like serving the DT or the DT kitchen, enthusiasm is there. But when it comes to chanting, interest goes down to keep the same enthusiasm. Chanting. बोलिए. महाराज एक प्रश्न है कि जो अन्य सेवाएं करते हैं, विग्रह की सेवा हो, उन समस्त सेवाओं में तो शायद उत्साह बना रहता है, परंतु जैसे ही नाम जप करते हैं तो नाम जप में वहाँ वैसा उत्साह नहीं दिखता है। Yes, this is why we should practice chanting and developing. That takes time. तो इसीलिए हम निरंतर अभ्यास करना पड़ता है और फिर वह रुचि जागृत होने में समय लगता है। Guru Maharaj said there's 2 mantras, right?
one for sleeping, one for waking up. Mahaprasade Govinde, that everybody is awake. हमारे लिए स्मरण दिलाते हैं, दो मंत्र होते हैं, एक उठाने वाला और एक सुलाने वाला। Sulane wala. महाप्रसाद का गोविंद यह मंत्र तुरंत जगा देता है व्यक्ति को। Sulane wala means ओम नमो Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेव, ये मंत्र सुनते बराबर व्यक्ति आंख बंद जाती है। Yes, we are enthusiastic in many other things. तो हम जो बाह्य व्यवहारिक जो कार्य होते हैं उसमें बहुत उत्साह दिखाते हैं। But remember, the process in Kali Yuga is not deity worship. तो यह समझना चाहिए कि कलयुग का जो प्रमुख विधि है वो विग्रह की सेवा नहीं है। The process is chanting of the holy name. हरिनाम का उच्चारण यह प्रमुख विधि है कलयुग की जो हमें उद्धार कर सकती है। But because we're not pure, we have to also do deity worship. क्योंकि हम उस शुद्ध सत्व में स्थित नहीं है, तो सत्व में आने के लिए हमें यह विग्रह की सेवा आदि भी सिखाई। So by hook or crook, we should make our chanting process very also beautiful. तो ऐसे हो वैसे कैसे भी करके हमें अपने पूरी शक्ति जो लगाना चाहिए नाम जप को विकसित करने। So you should pray in your heart. Yes, I know, I'm convinced. Hare Nam eva kevalam. हमें अपने हृदय में यह बात अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। हम समझ चुके हैं इस हरिनाम के मंत्र को। If you are a beginner, then you chant 1 round, 2 rounds. तो आप जब नए होते हैं तो एक माला करते हैं। So the older we become in Krishna consciousness, then we should try to make it, we should offer Krishna the best quality. जैसे हम प्रकट करते हैं श्री कृष्ण को सबसे अच्छे से अच्छा जप अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। It comes with practice. नियमित निरंतर अभ्यास आवश्यक है। But that should be the goal. I work on my japa. परंतु यह लक्ष्य सदैव बना रहना चाहिए मन में कि मेरा नाम जप मैं कैसे ठीक करूं, मेरा नाम जप में कैसे सुधार करूं। Offer Krishna the best. और श्री कृष्ण को अच्छे से अच्छा जप मैं अर्पित करूं। Right? Thank you. Okay. और दूसरे प्रश्न- Yes, Prabhu, some other question there. 1 minute. जो भक्त जुड़ जाते हैं तो बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो तिलक लगाना, मुझे घंटी मार दे दो, चैंटिंग भी करता है, कुछ और भी करता है। स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्ट ऐसा करता है कि इनिशिएशन ड्यूटी है उससे ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि कितना ये हमसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, भक्ति कर ऐसा लगता है। लेकिन 2-3 साल चलता है और 2-3 साल के बाद में ऐसा है कि उसको जबरदस्ती आओ आगे में आज क्या बात हो गया, छोड़ देते हैं। आपको मेंटेन है। Yes, I mean, this enthusiasm is some casual enthusiasm. प्रश्न था कि पहले भक्ति जो बहुत उत्साहपूर्ण रॉकेट की तरह होती है, फिर एकदम 3 वर्ष के बाद में कम होने लगती है। तो प्रभु जी ने उत्तर दिया कि उस समय प्रारंभिक जो भक्त होता है उसमें जो उत्साह देखा जाता है वह उत्साह भक्ति और उनकी पवित्रता के कारण ही होता है। Yes, these are some casual, temporary enthusiasm यह केवल क्षणिक मात्र है। due to our past punya. कुछ पूर्व पुण्य के कारण भक्ति में प्रारंभिक समय में कुछ आकर्षण और उत्साह अनुभव होता है। So the most important is we constantly follow the rules and regulations. तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि निरंतर हम समस्त नीति नियमों को दृढ़ता से पालन करें। Krishna consciousness is not something external. कृष्ण भावना केवल बाह्य प्रक्रिया नहीं है, It is internal. यह आंतरिक हृदय के परिवर्तन की प्रक्रिया है। So it's internal, it is purification of the consciousness. तो आंतरिक अर्थात जब चेतना का शुद्धिकरण होता है। So how to keep it up? By associating with those devotees who are also very strong in their bhakti. उत्साह को सदैव कैसे बनाए रखा जाता है? निरंतर ऐसे भक्तों का जब संग करे जो उत्साह से पूर्ण हो, भक्ति में सुदृढ़ हो। If you separate yourself, you don't come, and then you associate with outside people, and then you get influenced by the 3 modes of nature, and then your enthusiasm goes down. जब नियमित सतत भक्तों का संग नहीं किया जाता है और संसारी लोग 3 गुणों से प्रभावित भक्ति के उत्साह को
क्षीण कर देता है। The whole world is full of three modes of material nature. संपूर्ण जगत तीन गुणों के प्रभाव से भरा हुआ है। The place where you work, the place where you sleep, the place where you're स्थान जिस स्थान पर traveling, काम करते हैं, जिस स्थान पर आप सोते हैं, it's everywhere is the three modes of जिस nature. स्थान पर आप अन्य व्यवहार करते हैं, सभी स्थानों पर तीन गुणों का प्रभाव है। So Maya tried to pull you down. तो माया क्या करती है, यहाँ जितना ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, बाहर जाकर तुरंत वो माया आपको नीचे गिरा देती है। So you should make yourself secure yourself from. कि असल संगति के जो तीन गुणों का प्रभाव है, इससे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। One day you get up 3 o'clock. एक दिन आप एकदम उत्साह के साथ 3 बजे उठ जाते हैं, Another time you sleep late. और अगले दिन आप फिर देरी से सोते हो, Don't feel like getting up. और अगले दिन तो आपको उठने की इच्छा तक नहीं होती। One day you stand 16, 20 rounds. एक दिन आप 16 मारा करते हैं, Another दूसरे दिन time- 20 मारा करते हैं, Another time no round. और फिर तीसरे दिन मूड ऑफ हो जाता है तो एक भी मारा नहीं करते। This is not fixed up. So we should work, we become constant in making progress. Anarthas should be given up. तो दो बातें आवश्यक है, एक तो साधक हो, नियमित रूप से किया जाए, और क्रमशः उसे फिर बढ़ाया जाए। So association is the most important point. तो ये प्रभु जी का प्रश्न था, उसके उत्तर में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि उत्साह निर्भर करता है आपका संग कैसा है उसके ऊपर। And you have TV at home, you want to watch TV. तो फिर आजकल तो टीवी आ गया है, दिन रात लोग टीवी देखते हैं, Serials होता है, serials सीरियल देखते हैं, mobile phone है, और मोबाइल पे आ गया, and you putting the whole world in your mind और consciousness. वो मोबाइल और टीवी को देख के संपूर्ण संसार का जो अनर्थ है वो आपकी चेतना बुद्धि में भर जाता है। And this will weaken your bhakti. और जैसे ही यहाँ संसारी संग होता है, यह तुरंत भक्ति की प्रगाढ़ता को ढीला कर देता है और भक्ति आपकी ढीली ढाली हो जाती है। हरे कृष्णा। Yes. जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि को शरण गए और श्री राम गुरु की आवश्यकता जैसे विचार सागर के तीसरे तरंग में कहा है, तो ब्रह्मनिष्ठ है, वेद शास्त्र संपन्न है, जिसने शास्त्र अध्ययन किया है, ऐसे गुरु को शरण जाना चाहिए। लेकिन ऐसे गुरु कलयुग में कैसे पहचाने? Everybody is here. So I believe he said, how can we identify? How to identify a qualified guru? Very good question. So, guru, different types of guru. कई प्रकार के गुरु थे। There is also kanguru. कंगारू भी एक होता है। Kangaroo. To guru is, Prabhupada said, if you want to go and buy gold, प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि जब आपको सोना खरीदना हो, you must have some knowledge what is gold. तो कम से कम थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए सोना होता क्या है। Then if you must have some knowledge, otherwise you will be cheated. अगर आपको कुछ ज्ञान न हो तो आप धोखा खा जाएंगे। So guru is one who abides by the scriptures. गुरु का प्रथम लक्षण यह है, Example. गुरु वह है जो अपने निज आचरण से दूसरों को शिक्षा देता है। Guru is one who also he has his guru. गुरु वह है जिसने अपने जीवन में भी गुरु को स्वीकार किया है। And guru also should be having purity of heart. गुरु का हृदय पवित्र होता है। So there are many rules to describe who is a guru. तो गुरु के कई लक्षण शास्त्र में दिए गए, वो लक्षणों को अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए। And guru should also be coming from parampara. और एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आने वाला होना। Guru is not selfish. गुरु निस्वार्थ होता है। Guru is compassionate. गुरु करुणा से पूर्ण होता है। Nowadays are many gurus आजकल कई ऐसे गुरु हैं who wants to be glorified or is giving some blessing, some ashes, some magic. आजकल ऐसे कई चमत्कारी गुरु हैं जो अपना नाम बढ़ाने के लिए कुछ चमत्कार दिखाते हैं और राख And और people कुछ जादू दिखाते हैं and people say, wow, और सबके फिर आंखें खुली की खुली रह जाती है he must be God. और
लोग सोचने लगते हैं निश्चित रूप से ये लोग भगवान होना चाहिए। So the many fake gurus and dongis also. ऐसे के ढोंगी गुरु भी होते जो अपने आप को भगवान बन के बैठे हैं। So this is why there's niyam about who can be a bona fide spiritual master. तो ऐसे कई नियम हैं कि कौन प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, उन समस्त नियमों का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। Because people nowadays, they don't know, they're getting cheated. और दुर्भाग्यवश आज के वर्तमान में लोग जानते नहीं, इसलिए धोखा खा रहे हैं। He's giving me some blessing, I'm getting rich, I'm getting money. That's guru, yes, but this is not the duty of guru. मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, मैं बहुत धनी बन रहा हूँ। The guru is one who helps a disciple to get rid of his anarthas, and the devotee become attached to Krishna. So you can analyze this. And you will find that gurus in our society, in our ISKCON, are many genuine and bona fide spiritual masters. हरे कृष्ण आंदोलन में कई प्रामाणिक गुरुओं को हम देखते हैं। यस्य प्रसादात् Bhagavad prasado yasa prasada na gati kutopi. By the mercy of Guru we get Krishna, by the mercy of Krishna we get Guru. तो कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से फिर श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। Samsava Davanal means one who burns the fire of material existence is a Guru. तो यह संसार जो दावानल के समान चल रहा है, इस अग्नि को जो शमन करते हैं वे है गुरु। Right? So that's how we can find out. But is there? Yes, there is bona fide Guru. कई प्रामाणिक गुरु है, आप प्रामाणिक इच्छा करके गुणों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। Otherwise, if we want to be cheated, we will be cheated. जिसको सस्ती चीज चाहिए उसको सस्ता गुरु मिलता है। If one is blind, if someone is blind, you follow him. You also. अंधा है और वो अंधे का हाथ पकड़ लेता है। If he falls in the ditch, तो पहला अंधा यदि गड्ढे में गिरेगा, you will also दूसरा अंधा भी गड्ढे में गिरेगा। go in the ditch. So one more point is Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmritam Yena Tasmai Shri Guru means we are all born in the darkness of ignorance. Gurudev comes and open our eyes with the torchlight of knowledge. जिससे हम प्रतिदिन वंदना में कहते हैं हम सभी अज्ञान के अंधकार में जन्म लिए और गुरु वहाँ है जो आध्यात्मिक चक्षु के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। कोई मारुति कार से आए, कोई पायलट विमान से आए तो लोग उन्हें गुरु समझते हैं, बाबा भी धारण किया है। तो कोई पैदल गजानन महाराज करके होंगे तो अजान को तो उन्हें लोग अलग भाव से देखते हैं। ये कलियुग में गुरु को कैसे पहचाने? घोड़ों के लागे धंधे तो संसार पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण पुनरअपि जननी जठरे सेवा यह संसार है कलु दुस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे। चरपट पंचमी का स्तोत्र में श्रीमद आद्य शंकराचार्य कह रहे कि इस संसार में तरने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बताएं अब भगवद गीता 4:34 श्लोक पढ़ लीजिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस। यही है ज्ञानिनस मतलब गुरु तत्वदर्शन, क्योंकि वो ने दर्शन कर लिया भगवान को, वो हमको ज्ञान देगा। लेकिन कैसे? हाउ टू अप्रोच गुरु? One try to approach spiritual master by rendering devotional service and offer obeisances unto him. तो गुरु को जानने के लिए आवश्यक है कि पहले गुरु के पास कैसे जाया जाए। तो अत्यंत समर्पण के बाद दैन्य भाव के साथ जाकर सेवा करनी चाहिए। Not challenging, but with the mood of upadekshanti te jnanam. Upadekshanti, coming closer, sit down and beg in prayer. अत्यंत विनीत भाव से नम्रतापूर्वक सेवा करके उन्हें समझा जा सकता है। Thank you. Hare Krishna. Also we stop here. Sri Prabhupada ki Nitai Gaura Vivanande.
श्रीमान सुंदरलाल प्रभु जी की